Ministry of Ministry of Overseas Indian Affairs, the term person of Indian origin is applied to a foreign citizen of Indian origin or descent. Technically, he should be belongs to a person who is at any time has held an Indian passport. मिल सकता है. Anyone either whose parents or any of whose grandparents or great grandparents were born in India or permanently residing in India as defined in the Government of India Act 1935. The purpose of citizenship in India or a personal of and a person of India, citizen of India and person of India. Origin cover in the above two categories of PIO. One difference between the Jewish diaspora and the Indians. The term diaspora originated from Jewish diaspora. Jewish diaspora means originated from the Greek language and referred to the dispersal of a population through colonizations. Diaspora originated from the Greek language. Dispersal of population through colonizations. The term acquired a sinister meaning when it referred to the dispersion of Jews, African and Americans. For these people, diaspora meant a collective banishment, a traumatic exile of the people from their original homelands by force. ले गए दूसरी जगह diaspora. Today, the term implies a positive relationship between the migrants' homelands and their place of the work and settlement. In the Indian context, immigration was the purpose of trade and propagation of religion. But in the case of Jewish diaspora, the Jewish traumatic exile of people from their homeland by force उनको निकाला गया. In the context of Jewish diaspora, the Jews in exile after the Nebuchadnezzar's Babylonian conquest 597 BC and 587 BC were scattered. Jews हो गए थे in exile all over because of the absence of homeland के लिए. Was January 9 chosen to observe NRI. 9 because the fact that on this time Mahatma Gandhi returned to South Africa to lead Indian struggle freedom को. Your views on Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Order 2019. Gilgit-Baltistan. Actually, empowerment of the self-governance. Actually, in Pakistan, people should contest elections. Empowerment and self-governance order 2009 seem to have further strengthened the terrorist foothold in the regions. Actually, Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, people, students to contest elections. Never. World peace will come when 800 crores people know the politically they will aware है. राजनीतिक अवार होंगे when all students contest elections and their unity. India 800 university and they will contest elections. Then the doctors, engineers, farmers know about the farming, about the best known about the farming. So उन लोग तो चुनाव लड़ेंगे. जब सत्ता में women's girls they will contest elections, parliament they will go to parliaments. So in Pakistan dictators are in parliament, rich person in parliament, पूरा rich अमीर कैपिटलिस्ट जो हथियार बेचने के लिए सब अमेरिका आज दुनिया को बर्बाद कर रहा है. हथियार, war, arms, helicopters, missiles. So they should when common people contest elections, they know the problems, they know the refugee problems, refugee in Myanmar. So common people contest elections. Otherwise, they will evade from the country. देश से भगाए जाएंगे. Education से ज़्यादा contest elections. And common mans, the torture peoples, the tribals, the forest peoples, the villagers, 7 lakhs villagers in India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka is a dictator. Sri Lanka, only a family comes into the power. आम आदमी चुनाव लड़ेगा तब ब्यूरोक्रेसी जजेस एंड द मीडिया ये सब चेंज हो जाएंगे. आम आदमी जब चुनाव लड़ेगा
हर मोबाइल में मीडिया, the common persons, the students contact their role as a media. जब हर देश में स्टूडेंट्स मीडिया बनेंगे, कॉमन पर्सन बी द मीडिया, contest elections, then will be revolution will comes, that elections revolution आएगा वर्ल्ड में. गिलगिल बाल्टिस्तान भी वही, जैसे ऑर्डिनेंस आर ग्रांटेड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी टू पाकिस्तान को, नॉर्दर्न एरियाज इट असाइन दो. आइस पढ़ने से कुछ नहीं होगा. आइस के ऊपर उनका नेता होते हैं, उनका लीडर, उनका पापा माँ. सो ग्रांटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दुनिया में अमीर कुचला है गरीब को. कैपिटलिज्म अभी कुचल रहा है. जीएसटी सारी सब बहुत सारी, गरीब मर रहा है. सो गरीब को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा. इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन इज ए वाइटल थिंग्स, ये भी पूरा शेयर करो लोग के पास. 90 भारत में 97 करोड़ वोटर्स, दे शुड नो that we should contest elections. Our candidate should contest elections. 7 लाख गांव का कंटेस्ट करना चाहिए. इन पंचायत इलेक्शंस, also पंचायत इलेक्शंस seized by the political party. Political party हमारा विश्व में हमारा आका नहीं है. World should know. American Democratic Party and Congress Party, they will आका हैं, they were owner, they were dictators. अभी अमेरिकन पार्टी आया है. सो ऐसे इंडियन पार्टी, वैसे म्यांमार पार्टी, पाकिस्तान पार्टी, बांग्लादेश पार्टी, इंडिपेंडेंट शुड कंटेस्ट इलेक्शन इन एवरी कंट्रीज. देन पढ़ाई में कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है. पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, हर जगह में वीडियो को पहुंचाना चाहिए कि चुनाव लड़ो. चुनाव 7 लाख विलेजर्स, 800 इंडियन यूनिवर्सिटी contest elections. Villagers can contest elections. इन पंचायत इलेक्शन में नहीं भाग रहे. It assigned the region a new identity of a Gilgit-Baltistan. The granting of legislative assembly of a Gilgit-Baltistan autonomy in making laws in certain subject. Autonomy हमको कौन देगा? इंडिपेंडेंस तो 1 करोड़ 2 करोड़ जान दे गवाह का हमको मिला है. इन एवरी कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल्स, ब्लडी फ्रीडम स्ट्रगल्स, खून बहाए लोग. मगर अभी इलेक्शन लड़ो तो आराम से, पीस, इंडियन जो वर्ल्ड विल बी पीस, जस्टिस, शांति आएगा. गवर्नेंस विल सब्सटेंशियली एम्पावर्स द एक्सट्रीमिस्ट टू एक्सपैंड देयर पावर एंड एक्टिविटीज दैट वुड हैव adverse implication on Indian internal security. Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance Order 2009. It is the ordinance are granted political autonomy to Pakistan northern areas को दिया गया autonomy. It assigned the region a new identity on Gilgit-Baltistan side of the Indian border, the Pak occupied Kashmir. The granting of legislative assembly of Gilgit-Baltistan autonomy in making laws बनाने के लिए. Certain subject internal security and governance. POK Pak occupied Kashmir. ये सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो. पीपुल्स अवेयर ऑफ द इलेक्शंस. वोट देने से कुछ नहीं होता है. 80 70 80 ईयर्स पीपल आर वोटिंग, नथिंग चेंजेस. हेल्थ इंडेक्स, एवरीथिंग्स. आज गरीबों के लिए मेडिकल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन इज प्राइवेट. इंडिया भूटान ट्रेड, इंडिया भूटान ट्रेड रिलेशंस. इंडिया इज द लीडिंग ट्रेड. भूटान में भी चाइना की रोल है. चाइना में भी डेमोक्रेसी चाहिए. पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस. इंडिया इज लीडिंग ट्रेड पार्टनर ऑफ द भूटान एंड ट्रेड regime exists between the top countries. Broadly, India-Bhutan trade relation is managed by the overall framework of India-Bhutan. भूटान, बांग्लादेश में तो पूरा डेमोक्रेसी चाहिए. ऑल कंटेस्ट इलेक्शंस. फार्मर्स, लेबरर्स, माइग्रेंट. इंडिया में जो माइग्रेंट पीपल है लिविंग इन द अदर स्टेट वर्किंग्स, दे शुड कंटेस्ट इलेक्शंस. दे शुड यूनाइटेडली. सूरत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जो रहते हैं, मिलजुल के चुनाव लड़ो एमपी सीट में, एमएलए सीट में. देन योर वर्ड, योर वॉइस विल लिसन इन द पार्लियामेंट में. तुम्हारा वॉइस कोई बोलेगा. तुम्हारा भाई, तुम लोग चुनाव लड़ो. किसान 7 लाख गाँव का जो दर्द है, दुख है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, मंडिया, बिजनेसमैन लूट रहे हैं. बिजनेसमैन लूट एवरीवेयर गरीब को. The farmers not getting their own minimum support price. They should contest elections. Voters should be spread all over world.
ऑल इंडिया में फैलाओ वीडियो को। Bhutan trade relations managed by the overall framework India Bhutan Trade and Commerce Agreement, which has been renewed 2006 May for the next 10 years. India Bhutan Trade Exchange mainly carried in accordance with the India Bhutan Free Trade Agreement. India Bhutan Free Trade Agreement. Major items of export from to India: electricity, cement, timber, wood products. इंडिया में 100 रुपीज़ पेट्रोल, बट भूटान में 60 रुपीज़ पेट्रोल। व्हाट अ डिफरेंस। पीपल चुनाव लड़ो, बहुत सारी सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। स्विस बैंक मनी इन डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मनी इज लीडर्स, द पॉलिटिकल पार्टी डिपॉजिटिंग मनी इन फॉरेन कंट्रीज। वो पैसा कैसे आएगा? सो ओनली इलेक्शंस, कॉमन मैन कंटेस्ट इलेक्शंस। प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। मेजर आइटम्स एक्सपोर्ट फ्रॉम भूटान टू इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम भूटान, fruit to raw silk, alcoholic beverage. Major export from India to Bhutan are petroleum product to India से Bhutan, rice, automobiles, machinery. भूटान से आ रहा है electricity, cement, timber, wood products, food products, raw silk, alcoholic beverage. That import from India, Bhutan to India. Silk product, cement, timber. India से rice, automobile, spares, machinery, fabrics, petroleum products ट्रेड हो रहा है। कॉमन मैन, पाकिस्तान में कॉमन पर्सन्स एक्सप्लोइटिंग, बहुत पुअर और हंग्री, भूख में मर रहा है और चुनाव नहीं लड़ रहा है। मियांमार्स द सीरियस पोजीशन ऑफ द कॉमन पर्सन्स, डर डर के जी रहा है आर्मी से, मियांमार आर्मी। श्रीलंका कॉमन मैन चुनाव लड़ो, पार्टी चेंज होने से कुछ नहीं होता। चाइना पीसफुल राइज डॉक्ट्रिन्स, एक्चुअली चाइना पीपुल्स कंटेस्ट इलेक्शंस। In present international scenario, China is peacefully rising a significant power. Peacefully become the significant power. Education अच्छा है, primary education. Every हाथ को काम है. China has realized that only the currency that speaks in the world, geopolitics. Currency बात करता है. In the forex reserve, currencies that speaks in the world geopolitics, the foreign reserves. The rise of yuan was facilitated by the flooding of the international market. युआन का फ्लडिंग ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट में विथ चाइनीज गुड्स फ्लडिंग हुआ है, बाढ़ आया चाइनीज गुड का। एंड द बेजिंग स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल एरिना वाज इम्पार्शियल, द ओनली आर्बिटरी दैट कंट्रोल द रोक स्टेट्स लाइक नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। द रोक स्टेट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैंक्स टू प्ले पीसफुल राइज डॉक्ट्रिन थ्योरी। तो चाइना में भी डेमोक्रेसी चाहिए, पीपुल्स कंटेस्ट इलेक्शंस। Peaceful rise also has undercurrent the national internal desire to take to vacuum created by the Japan as the Asian masters. Japan is small countries, the Asian masters. In the context competed by India, it makes use territorial dispute and its growing friendly ties with Pakistan. Growing friendly ties with Pakistan के साथ friendly ties Pakistan. China does not really interfere the international politics में and affairs much. It does not get that much type of compared to other world powers के साथ. It has concentrated on its economy में. चाइना इकोनॉमी में ध्यान दे रहा है। और इंडिया का स्विस बैंक मनी कैसे आएगा इंडिया के अंदर? डोमिनेट पीसफुली विदाउट गेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद द वर्ल्ड पावर्स, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ इट हैज स्टार्टेड टू डोमिनेट। चाइना इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, which is the strategically located at the mouth of the Strait of Hormuz. It is view, but dictatorship is a danger for the world. वर्ल्ड वार के लिए सब लोगों को मारेगा। हिटलर डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल, हम लोग चुनाव नहीं खड़े होंगे तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो डिक्टेटर के लिए चुनाव लड़ो, इलेक्शन लड़ो, कॉमन पर्सन्स चुनाव लड़ो, देश को बचाओ। South China Sea dispute. Approximately 3.5 million square kilometer of the 3.5 South China Sea has been under dispute. China, Vietnam, Philippines, Malaysia, Taiwan, Brunei all claimed sovereign the territory because the sea is rich in oil and gas field.
China is defying arbitrary tribunal order as well. China defines not arbitral the arbitration tribunal order as well. किसको नहीं मान डिफाइन कर रहे हैं तो डिक्टेटरशिप चाहिए वर्ल्ड का पीस के लिए कॉमन पर्सन कंटेस्ट इलेक्शंस common person should come ahead. Spain, India, USA started